ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते आपको मिस्टर थॉमस। बेहद दिल से शुक्रिया आपके इस पॉडकास्ट सीरीज में आने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Disha, and God bless you. ऑल राइट सर, सो बेसिकली पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, वेयर आई वांट कि आप हम सभी को बताएं कि आप इतने बड़े मुकाम पे कैसे पहुंचे। व्हाट्स योर सीक्रेट मंत्र ऑफ सक्सेस? कैसे हुआ आपकी जर्नी में? हाउ दिस एफएम हैपेंस टू यू? ओवर टू यू सर। Thank you, Disha, for asking me to escalate you to the how I reached this ladder of FM industry. I would like to tell you that let me introduce you myself to you. I am a defense veteran. When I say defense veteran means I retired from the Indian Naval Service of our glorious 20 years of service, and then I chose FM because I was already in the service industry, because we are giving service to the country and to our basic organizations. So I chose FM as a continued platform for me, as a second inning, and almost it's around 15 years that I am with the industry right now. Down the line, if I go through my memory lane, I have various at financial and banking institutes, residential and commercial institute. Then right now I'm with a developer. We are looking into total facility and property management of the organization. The FM industry is an appealing one because it's a multidisciplined one, multi-talented one, and everyone in the business looks at you for a solution. It may be anything right from the gate right into your offices. The FM industry is looked upon as a single point of or a buck stop solution. That's why FM industry really fascinates everybody, and people look upon FM industry for everything. So continuing my journey with FM, I have worked with many FM related organizations, and I was right from the coordinator level to a decision making level. I have passed through this journey. Right now, I'm with a developer. We are looking at multiple residential complexes and commercial complexes where we are instrumental in giving the property management and facility management services to the clients. Very well said, Mr. Thomas. Okay, so let's go to the second phase. तो आपने बोला कि आप आर्मी से भी हो, आपका वो टच है, आपको पता है कैसे मैनेज करना है टीम को. Everywhere it's like first team management, team building, team compassion. Right. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी थॉमस कि जैसे हम लोग एक डिग्निटी अपने लिए सोचते हैं, पर हम कभी कभी, नॉट एवरीबडी बट कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि सुपरवाइजर, जेनिटर्स और काफी जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी भी एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, होती है. तो यहाँ पे थॉमस हमें आप बताइए कि कभी आपके पूरे इतने बड़े लीडरशिप स्पैन में, इतने बड़े लाइफ स्पैन में आपने कभी ऐसा कोई एरिया देखा जहां आपने खुद बोला नहीं, आई हैव टू मेक अ चेंज, आई नीड टू ब्रिंग अ चेंज? ओवर टू यू सर. Thank you, Disha. Diksha, just I told you that I was a retired naval officer, and I have completed 20 years of services. So in the defense force, we have everyone dignified for their work, whether he may be a junior entry level or he is a superior level. At any levels, all have got their dignity of their work, and all are equally important as each other. So I carry on this same feature to the corporate world, where I consider every person as a hook, as a chain. He's like a chain, a member of the chain. If one weak link is there, he's definitely going to break the chain. So for me, every person is as equally important, and that's why we need to give them that dignity. We should make him feel important. When I say important, even if he's at a lower level as well as a task level group, still we should consider him as the most important person. Why? Because if he fails, everyone above him starts failing. Right? If a janitor is not doing his job, and if he doesn't know what is he doing and why is very important, probably he will land you up in a situation where it's very really embarrassing. I completely resonate with you, Thomas. I think it is important. और आपका तो background ही है, तो आप ये ज़्यादा समझ पाएंगे क्योंकि जिस पे बीतती है वो समझ पाता है. So I think words से नहीं, but हम शब्दों से नहीं, पर हम काम से action. Yes, but you should demonstrate it by an action. For example, the moment you see a janitor guy, you must always appreciate his smallest job, even his smallest job,
in such a way that he feels that he's important. He's important. Why is important? Because if he is not good or if he's not performing well, I am failed. I have failed in my job. I have not trained him. Probably I have not appreciated him. I have not motivated him. So indirectly, it's the senior management. Down the line, everybody fails because of a failure of a single person. And इस चीज से मुझे ये जरूर समझ में आया कि ग्राउंड स्टाफ का भी लिंक्डइन प्रोफाइल होना अनिवार्य है मुझे ऐसा लगता है एट द रेट फिर नाम छोड़ देते हैं सपोज करिए कि राम है भोला है जो भी नाम है किसी भी ग्राउंड स्टाफ का आई थिंक दोज पीपल ऑल्सो बी appreciated not only in the office but outside the world as well, equally appreciated everywhere. Yes. Truly agree with you. Yes, everybody should be available in some platform to know what he is, because everybody is progressing in some way or the other. So why not they, and why not everyone in the industry? Maybe he may be a security person at the gate. His profile shows that he is the watchkeeper of the entire organization. He is the forefront guy for the entire organization. Why can't he be portrayed? Why can't he be put in that LinkedIn profile or any profile where it shows that he is also very important in his work? Yes, and I think office में काफी hierarchy लगा होता है. There is, I've always seen an organization chart or hierarchy chart. I'm sure उधर भी उनको स्थान देने की अभी अनिवार्य है. चलिए आगे बढ़ते हैं थॉमस नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम बातचीत करना आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी आजकल काफी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. मैं नहीं चाहती, मतलब मैं बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट आई बिलीव टेक्नोलॉजी कभी भी किसी चीज को रिप्लेस नहीं करेगा. इट्स जस्ट गोइंग टू बी एनेबलर, हेल्पर. तो मुझे ऐसा लगता है थॉमस, पर कहीं ना कहीं सपोज अगर मैं गार्ड हूँ ओके और मैं अगर फोन से अपना पेट्रोलिंग कर रही हूँ या डिफरेंट अदर एक्टिविटीज कर रही हूँ फोन की मदद से, तो कई दफा मेरे ही मैनेजर्स बोलेंगे कि दीक्षा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे आप पे उतना ट्रस्ट नहीं है, समथिंग लाइक दैट. दे फील लाइक अगर मैं मेरे हाथ में फोन है तो आई एम वेस्टिंग टाइम फॉर द ग्राउंड लेवल or only for the ground staff, not for the supervisor. तो सर आपकी इसमें क्या राय है थॉमस? Over to you. Yeah, so if technology is enabled and becoming upgraded for me, why not for he? You got my point? If yes, technology is upgraded for me, why not for he or she, whoever is there at the task level? He will feel more and more competitive, more and more efficient, and more dignified when he is given a gadget where he can use it very appropriately. If a gadget is given to him, he himself will feel motivated to use it and to get into his job. For example, now we are talking about a mobile phone. The mobile phone has evolved into a greater way where it has become a total hand tool for you. If the guy who is there at the task level group, if he's given a mobile activated device, it will be a total help for him in every way. He doesn't have to go and tell somebody. He can just communicate it using that device. I am in a total sync with everyone who says that yes, technology should be even given to them as well. Very well said, Thomas. मैं भी बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि हमें उनको भी सशक्त करके उस लेवल पे लाना जहां हम कंधे से कंधा मिला के मार्च अहेड करें. That is very very important in today's scenario. Okay, going to the last segment of the discussion, sir. आप मतलब काफी दफा मैं फैक्ट्स पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि जेनिटर ना खुश नहीं होते कभी कभी. जेनिटर सुपरवाइजर बोलते हैं मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा ज्यादा काम, पर ये उनका काम होता है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव 5 टास्क, दे हैव डन 4, बट 5th के लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, उनको नहीं उतना आता, तो वो हिचकते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं, बताते नहीं है कि मुझे ये नहीं आ रहा. तो इस कंडीशन में एक लीडरशिप मैनेजमेंट टीम और एक सुपरवाइजर टीम आपस में बातचीत करके इस चीज को कैसे सॉल्व करे? वो टू यू सर. ओके, जैनिटर कुछ नहीं होता, सिक्योरिटी वाला बराबर नहीं है. These are all things which are told. See, why is not happy? First thing is you should understand why he is not happy. उसका reason क्या है? Is it because of his work, or is it because of his some background issues, or is he not happy with his colleagues? Something. So the moment his superior or his manager level guy finds out that yes, there is something wrong with him, he's not able to deliver his efficiency, it's his job to find it out first. The moment you get into his profile or into his issue, probably he gets more motivated and he will start having a bonding with you. Even if he doesn't like his job, he knows that somebody is there with you, he will definitely start working with you. I'll give you an example of my daily work.
I have a, what do you call, a steward boy who comes and serves me tea every day when I come into my office. One day I told him, दोस्त अभी तू मत करना, मैं खुद आके अपना चाय बना लूंगा. I will make my tea on my own. And I showed him how I make the tea. He was so much happy to see a new technique which I showed it to him. I showed him a different way of making a tea. He gave the same kind of cup of coffee to everybody, tea and coffee to everybody. Amazing it was. He did receive a lot of appreciation. He received a lot of appreciation, not just because he made a change, but then he did a definite, what do you call, a grasping thing from me. He got and he told Thomas sir ने ऐसे आके कुछ चाय बना के लेके गया, मैंने देख लिया और मैंने उनसे ये सीख लिया. He has become a center of attraction now. Similarly, everybody must try to be part of the team. I just can't be sitting on my chair. I need to go down. I should see what he is doing. I should also help him. If he finds it difficult, you should ask him, दोस्त यार क्या हो गया तुमको? तुम तो इससे अच्छे काम कर रहे थे. When you get into it, probably you will have a solid team. There will be nobody who is unhappy. There will be everybody telling you the truth to you. They will come to you as a, as a person who can be approachable. True. तो यहाँ तो आपने बिल्कुल ही पते की बात करी कि जहाँ पे आपने बोला कि आपने उनको सिखाया, उसने ग्रास्प किया, उसकी शक्ति अच्छी थी, ट्रेनिंग की, नॉलेज की और ग्रास्प करने की शक्ति अच्छी थी, उसने काम किया एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. बट यहाँ पे सर मेरा एक और प्रश्न फिर दिमाग में स्ट्राइक किया, तो इसी के साथ पूछ लेती हूँ. वो प्रश्न ये है सर थॉमस की, सपोज करिए कि मेरे साथ आपके पास 5 लोकेशन है, आप लीडर हो, आपके पास 5 लोकेशंस हैं, सपोज करिए पूरे पैन इंडिया में, मुंबई है, कुछ भी लोकेशन उठा लीजिए. उस लोकेशन में आप कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं एज अ लीडर, बट मेरे को वो चाहिए नहीं चाहिए, मुझे डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया ही नहीं जाता एज अ जनरेटर या सुपरवाइजर. तो यहाँ पे हमेशा काम तो मुझे करना है, टेक तो मुझे चलानी है, ऑपरेशन मुझे चलाना है और लीडरशिप कुछ भी लाके लगा देते हैं, ये हो रहा है. तो मेरे को ये आपसे समझना है थॉमस सर कि यहाँ पे कितना जरूरी है एक मैनेजमेंट को नीचे ग्राउंड स्टाफ से बातचीत करना कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, आर यू हैप्पी विद दिस और यू नीड सम ट्रेनिंग, कितनी साझेदारी की आवश्यकता है सर ताकि बोथ पीपल विल बी मोर आत्मनिर्भर. ओवर टू यू थॉमस. Yeah, so Diksha, this is called involvement of the team. Now when we say involvement of the team, see the organization, the top management, the senior management, they want to implement a change at every step. It's not only in technology, anywhere you need to step up and or upgrade yourself. So the management will decide, okay, for example, I'll give you example of our organization which has gone into a paperless mode. Okay, the organization has seen so many good factors, good things which are there in the paperless technology, but how to get it implemented? The top level team always knows, mid-level team always knows, but the executing team is the ground level staff, right? So the ground level staff needs to be involved at the right stage of where the implementation is going to take place, right that day itself. When I think, okay, boss, कल से तुम्हारे पास मोबाइल आना वाला है, कल से तुम्हारे पास ये आना वाला है, it should start getting into them at that level. Not that everything is ready and then you have to do it. It has to be done at that level. When I have taken a decision that I have to go for a paperless technology, from that day onwards, start polishing the people. The people will feel, yes, अभी से हमको बता रहा है, अभी से हमको कर रहा है, ये है, ये है. They will have their own ideas, new ways of doing things. They will start growing up in that way. They will start having a lot of questions in them. Okay, whether I can do, I will be able to do this. Are my questions. They will be prepared to take the new technology. That's how we did it. We started implementing these things by first telling it to the people. We started telling them the advantages. We started telling them, कल से तुम्हारा पॉकेट में ब्लू कलर का दाग नहीं होगा, तुमको सिर्फ पेपर में सिर्फ टच करना है. So it starts with them in that way. So when they see something good from the bottom level itself, then the thing starts streamlining in a very proper manner. And that's what I have already informed this in our organization that yes, we must involve everybody right from the start to the bottom. I think ये बड़ा ही जबरदस्त टेक अवे है कि आपने बोला सबको इन्वॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर बहुत कंपनीज अभी भी ये नहीं कर रही है. तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लोग हैं, मेरे सुनने वाले हैं, तो प्लीज इसको टेक अवे लीजिए. थॉमस सर ने बहुत सही बात बोली है कि ऊपर से नीचे तक एक एक
जब हम क्या बोलते हैं उसको, मोती पिरोते हैं ना, जब वो पिरोएंगे तभी एक प्लान और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो बिखर के खराब हो जाएगा, टूट जाएगा. वेरी वेल सेड सर. थॉमस सर, लास्ट एक इंस्पिरेशनल लाइन या कोई ऐसी लाइन टू द एफएम फ्रेटर्निटी, टू फ्रेटर्निटी दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ. ओवर टू यू सर. There is, I am always fascinated with one sentence, that is nothing without you. Nothing without you. Matlab, if you are there, then I am existent. If you are not there, I am also not there. So this feeling and this line should be told to everybody. Why everybody? Because सबको लगना चाहिए कि हाँ मेरे वजह से ये है या इनकी वजह से मैं हूँ. So that's why I use this line. I use this as a tagline. Nothing without you. Very true, Thomas. I think हमारे शरीर के अंदर भी जितने अंग हैं वो एक दूसरे के बिना बेमतलब बेस्वाद है. तो I think फिर FM कैसे अलग रहेगा, FM कैसे एक से चलेगा, कोई भी किसी का भगवान नहीं. I think सबके सम्मिलित होने से ही दुनिया, और स्पेशली FM के न चलने से कितना बड़ा भौकाल आ जाता है. एक दिन इलेक्ट्रिसिटी न चले तो सोचो क्या हो जाएगा. नुकसान ही नुकसान. So I think very well said sir. दो चीजें मुझे आपकी दिल को छुई है. पहला, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ऊपर से नीचे तक को साथ में पिरो के एक साथ आगे चलना, तभी कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. और आपने जो कंपैशन की बात की वो दिल तक टच किया. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए शो पे. जय हिंद सर. Thank you, Disha. Thank you and God bless you. Yeah, take care.